वेलकम टू द माय चैनल लर्न विथ एक्सपीरियंस। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम था। चैप्टर 5 है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया था एनसीईआरटी की बुक से। आज उसी बुक से हम लोग जो एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10 के अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम करने चल रहे हैं। सो विदाउट डिले वी जस्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है करके वो क्या करना है, क्या दिया हुआ है, पहले हम उसको देख लेते हैं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर है 4 एंड इट रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि कोई एक सीरीज दी है, मान लीजिए जो भी सीरीज है उसका थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म क्या है, फोर्थ है और एट्थ। इसका मतलब हुआ कि तीसरा टर्म 4 है और नवा टर्म -8 है। रेस्पेक्टिवली का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर यहाँ पहले थर्ड लिखा गया तो पहला 4 हो जाएगा, बाद में 9th लिखा तो 9th का 8th हो जाएगा। दिस इज ओनली दैट। एंड व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। और कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 है। अगर तीसरा टर्म 4 है और अगर नवा टर्म इसका 9 है तो कौन सा इस एपी का टर्म 0 है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट first term A and common difference is D of given AP। लेट हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है ऑफ द गिवन एपी। जो एपी हमको दी गई उसका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है। एज वी नो हम जानते हैं अभी टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। where Tn is equal to value of nth term so for the third term T3 is equal to A plus 2D. You can consider if you place the n is equal to 3 here, so this will be the T3 and this will be the 3 minus 1 is equal to 2D, so it will be the 3 plus 2D. And we know the T3 is given already, the third term is equal to -4. T3 is equal to 4. We have also write T3 is equal to 4 and T9 is equal to -8 कह सकते हैं। यहाँ पर AP है गिवन दैट उनको दिया गया है। एज वी नो इतना हम लोग जानते हैं। सो T3 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर लिख दिया करके, तो T3 की वैल्यू जो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू T3 की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पर T3 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, सिर्फ हमने रिवर्स कर दिया T3 इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर हम कह देंगे 1। ओके, सिमिलरली फॉर 9th term T9 is equal to A plus 8D और A plus 8D is equal to T9 की वैल्यू क्या है -8। ओके, -8 यहाँ तक आप लोग समझ जाएंगे। ओके, दिस विल बी द
equation number 2. Okay, subtract equation 1 from equation 2. Then it will be a will be cancel, and 8d minus 2d is equal to 6d is equal to minus 8 minus 4 is equal to minus 12. Okay, or d is equal to minus 2. Now put d is equal to minus 2 in equation 1. इसे मन में पुट कर दो. Then it will be a is equal to a plus 2, because d वैल्यू इज माइनस, सो d की वैल्यू माइनस में, इसलिए हम d को ब्रैकेट में, वैल्यू उसकी ब्रैकेट में दे रहे हैं, इज इक्वल टू 4. ओके, सो a is equal to 4 plus 4, because when minus into plus is equal to minus, left side will be minus and we will transfer to the right side, then it will be plus. So a is equal to 8. Okay, now let nth term of given AP will be 0. Nth term, so we can say that the nth term is equal to 10. So we know 10, so Tn is equal to 0, as we know by formula. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Put the value of Tn, a and d in above equation. Okay, Tn is equal to 0 is equal to a is equal to 8 plus n minus 1 into d. D is equal to minus 2. Okay, so when we solve it, n minus 1 is equal to minus 8 divided by minus 2. Okay, so it will be, or n is equal to, or n minus 1 is equal to 4, or n is equal to 4 plus 1 is equal to 5. Hence the fifth term of given AP will be 0. So this is the solutions. Okay, so if you have any problem, you can comment
so I can explain again and I can make the again videos on the similar question or the same question, no problem. So मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप करने से पहले आप देख करके बताएं कि आपको वीडियो में ऐसा क्या चीज़ पसंद नहीं आया, या आपको किस चीज़ पर वीडियो आपको बनाना चाहते हैं, आप उसको बताइए। जो कमेंट में डालिए, मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा। स्किप करके जाने से पहले एक कमेंट जरूर करिए ताकि मैं समझ सकूं कि व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें जो है, और मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर